बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की। आई एम श्योर कि आपने कहीं ना कहीं अरस्तु का जिक्र तो सुना ही होगा। ये वही अरस्तु है जिसे इंग्लिश में हम एरिस्टोटल कहते हैं। ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड हैड अ नैक फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टफ। उसकी एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन थी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज को आइडेंटिफाई करना एंड देन ये डिसाइड करना कि विच नॉलेज बिलोंग्स टू विच ब्रांच। Because he loved classification, so he was the first person in history जिसने living organisms को दो groups यानी Animalia and Plantae में divide किया। Then in 700s, अबू उस्मान उमर अल-जाहिज ने अपनी एक बुक में 350 species के बारे में लिखा। He described their characteristics in detail. He also wrote a lot about the life of ants. इस सब के बाद by the end of 15th century, biologists really started paying attention to classification. उसके बाद आया Andrea Cisalpino in 1519 to 1603. He was an Italian botanist who introduced the idea of genera. उसने plants को 15 groups में divide किया and उन groups को genera का नाम दिया. He was also the first person जिसने plants को उनके seeds and fruits के according classify किया, rather than the more widely used method of using alphabetical order or medicinal properties. फिर बात आ गई जॉन रे पे in 1627 to 1705. He was an English naturalist and botanist जिसने establish किया that species is the unit of classification and wrote important books on plants classification. अगला बंदा था Augustus Rabanus from 1652 to 1723. He was a German physician and he introduced the taxon of order in classification. फिर बात आ गई Tournefort पे जिसने introduce किया class and species का taxa in classification. फिर बात आती है Carolus Linnaeus पे। What he did was that he focused on the physical characteristics of the species and grouped them on the basis of those. बायोलॉजिस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ करें जिसमें स्पीशीज़ की सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो। जो पुराने सिस्टम थे उसमें ऑर्गेनिजम्स वर ब्रॉडली डिवाइडेड इन 2 kingdoms, which leaves room for a lot of confusion and a lot of species cannot be precisely placed in any of these kingdoms. So scientists ने 5 kingdom system adopt किया and आज तक भी यही सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। Now we will discuss 2 kingdom system, 3 kingdom system and 5 kingdom system in detail and see how they work.